Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Freelance Working Institute and in the fifth lecture of Spoken English course. In today's lecture, we are going to learn about sentence structure and sentence crafting. As we know, for the better communication and for the effective communication, choosing a good sentence or crafting a good sentence structure or writing a good sentence or good paragraph for any purpose is crucial. First of all, before diving into the lecture, I want you all to read these two paragraphs. Let me read it for you. Many people read only the headlines of the news items. Many people skim nearly all the headlines in a newspaper. Headlines are the most read part of a paper. Headlines can summarize as well as present carefully hidden bias. So let's get move towards next paragraph. Many people read only the headlines and skim nearly all the headlines in a newspaper. Headlines are the most read part of a paper, for it can summarize as well as present carefully hidden bias. So you can analyze and you can see that sentence structure or choosing the sentences is most important thing for attaining the attention of your opponent or for any reader. In paragraph, too much repeating words are used and it's hard to understand it. Unlike other paragraph can be skimmed in a good way. So जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है in your effective communication. Being students of spoken English course, concept of sentence structure should be enshrined in ourselves. So सेंटेंसेस को कंबाइन करना इम्पोर्टेंट क्यों है ताकि जो आपका रीडर है वो इफेक्टिवली आपसे कम्युनिकेट हो सके और आप अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बना सकें एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट क्रिएटिविटी एंड यूनिक राइटिंग स्टाइल्स. So let's get started with our fifth lecture of spoken English course, sentence structure and sentence crafting. So in this lecture we are going towards the journey of sentence structure. From our very childhood, we are going through three sentence elements that are subject, verb, and object. What is subject? Subject is the core component of a sentence because it is the actor or it is the doer, okay, of any sentence. It is the main entity which is performing the action. For example, Mary went to the store. अब here in the sentence मैरी क्या है आपका सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्यों है क्योंकि वो एक डूअर है और वो काम कर रही है यहाँ पे. Moving towards verb. Verb is the action or state of being in a sentence. You can say it is any work, okay, any work which you are doing in the sentence. For example, Mary went to the store. Went वो जा रही है, ठीक है, ये क्या है आपका वर्ड है. उसका जाना वो एक काम कर रही है वो वर्ड है और जो वर्ड है ये किसके ऊपर इंडिकेट कर रहा होता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कर रहा होता है. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है एनी recipient of the action, okay, or you can say on which the action is being done. For example, Mary went to the store. Here is the object is store. क्यों क्योंकि स्टोर वो जा रही है और उसके ऊपर काम हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. तो ये तो एक बेसिक सा हमारे पास कंसेप्ट था. लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कंपाउंडिंग एलिमेंट्स की. फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं हम सेंटेंसेस को कंपाउंडिंग सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट मी रीड this sentence for you. Every news story is influenced by the attitudes. If subjects are the same, every news story is influenced by the attitude. Then every news story is influenced by the assumption. Every news story is influenced by the background of the writers. So uh, every news story is the subject, okay, because it is the main doer and the main component, and it is being used in these three sentences. Then keep the subject and join the verbs. What you can do despite of
uh, dividing this paragraph into three sentences, you can make it as a one line. How? Every news story is influenced by attitudes, assumptions, and the background of the writer. Why? Because our subject is same. हमारा सब्जेक्ट एक ही है। तो जब हमारा सब्जेक्ट एक है और जब आपने किसी से बात करनी है या जब आपने किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार यूज़ करेंगे तो ये आपको अनॉय कर सकता है अगले बंदे को। ठीक है, और फिर जो आपकी बात का जो एक तरह की वैल्यू है, इन्हांसमेंट है, वो ख़त्म हो जाएगी। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है। देन हम बात करते हैं कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने बात की सब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट और वर्ब सेम है, आपने कोई बात करनी है, पहले सब्जेक्ट सेम था, अब ऑब्जेक्ट और वर्ब सेम है। Let me recite it when if the objects or verbs are the same and you are being used different sentences. Newspaper is a type of media that caters to a specific target audience. Radio is another form of media that caters to a specific target audience. Television is also a type of media that caters to a specific target audience. So herein आपका सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है। पहले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट न्यूज़पेपर है, दूसरे में रेडियो है एंड तीसरे में टेलीविजन है। बट जो आपका ऑब्जेक्ट है, टाइप ऑफ मीडिया दैट कैटर्स टू अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, वो आपका सेम है इन तीनों सेंटेंसेस के लिए। सो व्हाट you can do is newspaper, radio, and television are types of the media that cater to a specific target audience. Just you have combined the subjects for the same verb or objects. तो ये क्या करता है, एक तो आपके बात को बिल्कुल प्रिसाइज कर देता है। बिकॉज इन द मॉडर्न टाइम अगर हम बात करें तो हर किसी को टू द पॉइंट बात करने की और टू द पॉइंट बात सुनने की आदत है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दे आर being very free in the life, but everyone want a precise knowledge and precise information and to the point talk. So कंपाउंडिंग एलिमेंट्स का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास होना चाहिए फॉर आर बेटर कम्युनिकेशन। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेनली टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वन इज सिंपल एंड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस contain a single independent clause. Independent clause और dependent clause में क्या फ़र्क है? Independent clause is that clause which serve as a single sentence, means that it can be it can be understood. Okay, and if we are going for dependent clause, then it can be stand as a single sentence because it needs some prior information for its fully understanding. Okay, as for example, for a simple sentence I can say I love reading books. Okay, or I can say I love crafting poetry. So these are simple sentences. Compound sentence, as the name implies, it is a combination of two or more sentences in which there are two or more independent clauses joined by the dependent clauses. And we are using coordinating conjunction. Conjunction are the words by the virtue of which we are going to combine our compound sentences. For example, she enjoys reading books, but he prefers watching movies. इसमें क्या है, if we break down into two, we can see he enjoys reading books, ये एक अलग सेंटेंस बन सकता है। he prefers watching movie, ये भी एक अलग सेंटेंस बन सकता है। लेकिन as for the sake of this sentence whole as a whole, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बट लगा हुआ है। अब ये जो बट है ये प्रायर इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि she enjoys reading books but he prefers watching movies। फिर बात आती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कम अज कम एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट फॉर अ वॉक। I can say independently she went for a walk, but I can't say after she finished her work. I have to attach some initial or some uh, extra information for the fully understanding of this sentence. For the complex sentences, for the compounding sentences, you are using coordinating conjunction, and for these understanding, there is a mnemonic: fanboys, for, and, nor, but,
or, yet, and so. So these are conjunctions you can use when combining sentences. नाउ सेंटेंस ड्राफ्टिंग टेक्निक्स की तरफ हम करते हैं। आपने ये सीख लिया है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप सेम वर्ब्स के लिए या सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए एक सिंगल सेंटेंस को आप क्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस ड्राफ्टिंग टेक्निक भी ज़रूरी है। हमारे पास यूजुअली तौर पर 3 सेंटेंसेस होते हैं। शॉर्ट हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं या फिर लॉन्ग सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक ही बात को हमने 3 डिफरेंट टाइप्स में या 3 डिफरेंट कंटेक्स्ट में हमने देखना है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट सेंटेंस, मीडियम सेंटेंस एंड लॉन्ग सेंटेंस रिस्पेक्टिवली। सो देयर हियर इज एग्जांपल, द कैट पर्स। It is very short sentence, but for the sake of medium sentence, I can say the cat with soft furred purrs contentedly by the fireplace. And and for the sake of long sentence, I could say with grace and agility, the sleek black cat with mesmerizing emerald eyes prowls through the moonlit garden, its every movement a testament to its feline prowess. So this is how somehow a very tricky sentence, but here is the detailed information about a very short sentence. So it's up to you that how can you uh, picturize a scenario. Okay, you are not going to use very long sentences, even if in oral speech or in the written speech. You are not going to use long sentences. Moreover, if you are a college or university students, for the sake of your question paper and for the sake of your answers, you are not using long sentences because it's followed by bad impression and low grades. Be precise and be medium, right? देन कुछ आपके पास प्रैक्टिकल भी है, मीन्स डैट ये आपने कोशिश करनी है कि आप इनको क्राफ्ट कर सकें। आपने एक इस तरह का सेंटेंस बनाना है जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी यूज़ करें, सब्जेक्ट भी यूज़ करें, वर्ब भी यूज़ करें। अच्छा, मेनली तौर पर हमारे पास जुमले जो होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं, वो सिंपल हो सकता है, जैसे अभी हमने बात की। वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? दैट वन विच इज गोइंग टू एक्सप्लेन अ थिंग, okay? And some can be declarative, means that which is declaring a fact or issue. For example, the sun sets in the west. Water is a universal solvent. So these are two universal truths. So in these sentences, I am declaring the fact. तो इसको हम कहते हैं ये declarative. Imperative means that you are going to order someone or you are going to uh, gain help from someone. For example, please open the door, please pass the jam, okay? Do do your homework, do collect this thing from that store. So these are some practical examples. You can use it and be polite in your usage of language, be polite in your crafting of sentences, because politeness is the key towards your effective communication. If you are not polite, if you are using bad words, if you are using slangs in the languages, so this is gonna to be a very very bad impression. So जब भी आपने अपने जो बात करनी है किसी से भी या आपने कुछ लिखना है, तो आपने एक सही और मुख्तसर बात करनी है जो पुरअसर भी हो। ओके, और स्लैंग वर्ड आजकल यूज़ होते हैं। स्लैंग वर्ड आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में अपनी फ्रेंड के साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने रिस्ट्रिक्टेड फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड फैमिली मेम्बर्स का ये मतलब है कि अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ, नॉट विद पेरेंट्स, नॉट विद ग्रैंड पेरेंट्स, आप स्लैंग्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप फॉर्मल हैं, मीन्स दैट आप फॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में हैं, देन यू हैव वन यूज़ slang word ever, because अगर आप अपनी किसी आप ईमेल लिख रहे हैं अपने किसी एम्प्लॉयर को, या फिर आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर आप स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं तो वो एक तो इम्पोलाइट बिहेवियर की तरफ भी आ जाता है और इल मैनर्ड इल मैनरिज्म की तरफ भी बात चली जाती है, तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा है कि आप एक सेंटेंस क्राफ्ट करें जिसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लें
और आप एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज पर emphasize कर रहे हैं. For example, the curious cat with the green eyes chased the elusive mouse under the old oak tree, and you are describing a scene there. ओके. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कैट है. वर्ब क्या है? चेसिंग, यानी वो चेस कर रही है. ऑब्जेक्ट क्या है? माउस है. एम्फसाइजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या है? कि द चेस द इल्यूसिव माउस अंडर द ओल्ड ओक ट्री. I hope you got the point. Then आप एक compound strings create कर सकते हैं using the coordinating conjunction which I have uh, teach you earlier that fanboys. Okay, use the mnemonic fanboys for its learning. For example, she enjoys hiking in the mountains, but he prefers the relaxing by the beach. How we know that this is a compound sentence? Just because of this coordinating conjunction. Then formulate a complex sentence with a dependent clause expressing a cause and effect relationship. Means that mutual interaction, you can say mutual interdependency. Because it was raining heavily, they decided to stay indoors and watch a movie. I can't say independently that because it was raining heavily. I have to attach some extra information for the clarity. Okay, so write an imperative sentence using polite language. Imperative sentence means any sentence using uh, order or pleasing, etc., etc. Could you please pass that salt? Okay, could you please open that door? Please polish my shoes. So these are some polite languages. Even if you are ordering someone, even if you are ordering someone in this modern time, you are not going to order anything. You are not going to order anyone because this is modern era, and everything which you could do is just politely. Even if even our religion says okay कि हम politeness से ही बात करें. ठीक है. फिर बात और exclamatory sentences भी कुछ होते हैं, यानी कि जब आपके enjoy को या आपके sadness को शो करते हैं. फॉर एग्जांपल what a god. ओके, आप किसी सीन को देखते हैं, ठीक है, what a hectic day. आप किस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी मार्क के ज़रिए से एक्सप्रेस हो रहा होता है. तो ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट या डिसबिलीव को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट एन इनक्रेडिबल सरप्राइज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमेशा याद रखिएगा कि the more you practice, the more proficient you will become in crafting well structured and engaging sentences. So keep moving on, keep experimenting with sentence patterns, and your dedication to learning will undoubtedly yield remarkable progress. Okay, so inshallah, until next time, keep exploring the beauty of the English language. I'll see you in the next class. Jazakallah. Assalamu alaikum.